हाँ रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गया. Okay, so Okay. just before we begin, like there are four of us in this meet who will be taking up this workshop. I think there is some echo out there. Okay, now it's fine. Okay, so there'll be four of us who will be taking this workshop. It will be me. There is Nishant Mittal, and there is Himanshu and Ashish. So Ashish will be answering all the chats uh, and all the questions that you have on chat. And the three of us will be taking up the workshop, like speaking in between. Also, we'll try to, after the meeting, we'll try to answer all of your questions. So if you have them, you can unmute yourself and ask at the end of the meeting. Okay, so like in this workshop, I think that since there are like a lot of first yearites, I guess 80% are first yearites. So we'll try to keep it, very easy for you to understand and get a hang of what GSoC is actually. And after that, once that is done, and once you are like comfortable, then we can maybe answer individual questions at the end. So with that said, I guess Himanshu can take the workshop now. And feel free to, Himanshu, feel free to talk in English as well as Hindi, but just make sure that you speak, the important points in English. So with that said, I guess he can take over. Thank you, Nishant. Let's get started. Okay, so most of you must have attended the Hacktoberfest workshop, which was just conducted by COPS. But still, for the sake of completeness, I'll just reiterate through the entire process, and I'll just start with open source software. So, what do you mean by open source, and what is open source software? So, open source refers to something people can modify and share because its design is publicly available. And similarly, along the same line, open source software is the software whose source code is public. That is, anyone can then inspect, modify, and enhance the code. That is, so there are uh, so proprietary software, that is the main way how, that is the paradigm in which most of the orgs have written their software, or their code is such that they are all limited, that only the members of the organization or the team can make changes to the software. Okay. Hello. Hmm. So now open source is something that is a way different from this. That is, anyone who is interested can view the code, can if they face any issues, if they are the users of the code, and if they face any issues, then they can make changes to it, and open issues, report their bugs to the developers themselves. Okay, so now all of this is fine. So now many people think that because it is open source, so many people think that open source is same as free software. So this is what is usually लोग यही सोचते हैं, but then this is not necessarily so. It just means that there is licensing in open source. That is, ऐसा नहीं है कि ओपन सोर्स किया है कोई चीज़ तो फिर कोई भी उसको फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, अपने से यूज़ कर सकता है, कमर्शियली अवेलेबल बना देगा. So there are licenses in open source which prevent others from putting the code generated to commercial users. Okay, so now, तो अभी वो क्वेश्चन आता है, the question that arises is that why open source? Okay, so mostly जो ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ करते हैं, ओपन सोर्स पैराडाइम को एक्सेप्ट करते हैं, सो उनका जो मोटो है, दैट इज नॉट जस्ट स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू डूइंग बिजनेस, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली कमर्शियल, इट मे आइदर बी फॉर might be for research, or just simply for fun. They are just doing things. So that is we need. So now, okay, so now let's see why
these companies have why many organizations have done open source, have gone through open source or are using open source. Okay, so anyone can say anything that what do they think about why most companies have, why not most companies, why the companies that have come into open source, why have they come into open source, why have they started it? Can anyone give whatever you are thinking? Can anyone say on the chat? It can help them to hire people. Okay, yes. Maybe it is possible that something To get the best that is efficient not code so their people can idea. do efficient one. Hello. Okay, okay. There might be some people who think that yeah, the changes they want to make some changes, and then changes are quite good. So it gives a chance to everyone, not only the ones who are in the company, but outsiders also to help the company enhance their code and help them to modify it in a better way to update it. Okay, so ऐसे what mainly everyone is saying is that it will help them to uh, improve their code and that others will contribute. But then if you'll actually go and open open source any open source organization or anything, you will not find many people contributing to it. I mean, uh, बिना विदाउट एनी इंसेंटिव, बिना तुम उनको किसी तरह का मदद दिए वो क्यों तुम्हारे लिए कोड बनाएंगे या क्यों कुछ करेंगे? So mostly the okay. So let me give the answer to this. Or so mostly, if you'll see, then at the company level, okay. So just take the example of any company, like uh, Google. So Google, for its development or for its procedure in its life cycle of anything, it will require so many different kinds of software, different kinds of tools. तो अभी it is not necessary कि सारे टूल्स गूगल के पास हो। अभी सारे बहुत सारे टूल्स के एप्लीकेशंस होंगे, बहुत सारे सारे टूल्स नहीं रख पाएगा। So what most companies do is that so that they can just focus on what their prime goal is, so they hire these tools from other sources. Okay, so now so like Oracle and all, if you'll see, then these are such companies which provide such tools which are used in turn by other companies. So now in these kind of scenarios, मतलब वो क्वेश्चन आता है ना कि हम जो डेटा इनको भेज रहे हैं, जिस डेटा पे प्रोसेसिंग होगा इसका, like when they purchase the software or the tools for their execution, so then the tool the control over the data temporarily goes to the you temporarily goes to the other company, right? सो द ये जो डाउट हमेशा रहता है कि द डेटा जो हमने भेजा है, सो इन उस उसमें कोई अदर देन वो द अदर देन व्हाट वी नीड उसका कोई और इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है? आर दे नॉट कलेक्टिंग आवर डेटा एंड दे आर नॉट यूजिंग इट फॉर समथिंग एल्स? बहुत सारे राइवल कंपनीज होते हैं। सो फॉर दिस व्हाट इज सो दिस एलिमेंट ऑफ डाउट ये हमेशा रहता है हर कंपनी में कि जो मैंने टूल्स जिस दूसरे कंपनी से मैंने टूल्स लिए हैं, इज इट नॉट ट्राइंग टू मैनिपुलेट द डेटा दैट माय डेटा? So for this, so most companies you'll see when you'll go into industry level, you'll see that most companies will when they will purchase tools, they will mostly prefer open source tools. Why? Because when something is open source, it is a mark that it is not doing anything wrong, that it is not doing any other hidden business with your data, because it is open source and that everyone can see the source code. So it is like a mark of uh, it is like a mark of cleanliness that not कि जो कोड दिया है that is proper, that जो tool है that is not doing anything else other than what is strictly required with it. So you can take it this way that जब तक का till the time जब तक कंपनीज एक दूसरे को फुल्ली ट्रस्ट नहीं करते, तब तक ओपन सोर्स पे वो रिलाई करेंगे।
So open source is going to be for a long time in the industry, for quite, for at least for quite some time it will be there. So this is तो at the industry level, but then we are conducting this workshop. मतलब कोई तो हम ये इसके लिए we believe that it is useful for you. Open source is useful for you. So can anyone say that what do you think? Why is open source useful for you? Just reply on the chat. Hello. Okay. So okay. So let me only say answer this. Okay. So now for us, we are students. So now for us to improve our development skills, we'll see that now the code that we write, mostly they are not large. We don't have much of industry exposure. So these open source uh, tools are these open source organizations are ways in which we students can improve our skills a lot faster. You'll see that those who are doing open source, their skills will improve a lot faster, and that is why most companies, if you'll see, when you'll go for internships or when you'll set for placements, तो फिर तुम देखोगे कि उनके इसमें बोनस पॉइंट्स में एक ये लिखा होगा कि have contributed in open source. So like it is so open source is actually something that though not many companies are into open source, but they definitely want uh, want to hire those who have done something in open source. Okay, so yeah. Now other than this, yeah. So now coming to the open source. Okay, so now can you go to the previous slide, Nishant? Uh, Okay, well, so now let's start with open. Okay, yeah. So now, how do you contribute to open source? Now, how many of you have heard about Git, GitHub, GitLab, Bitbucket, and all of these things? Uh, how many of you have already started using it? Okay, so, well, let's skip to it. Okay, great, great, great. So now these are version control tools and they are code hosting platforms. So now let's let's look into what exactly will be happening. So now in GitHub, if you so now when a team is working on a project, usually in those when different members are working on the same project, then to keep them both to keep all of them in synchronization, we can use Git, GitHub, GitLab and Bitbucket, all of these things. Now for we students we can either use it for that reason, or that, as we said, that most open source organizations that are there in out in the real world, so they are mostly on GitHub. Not necessarily that they will be on these platforms only, but they are most of them are on GitHub and GitLab or Bitbucket, so that so we can go and we can contribute to them, and it is a way for we students also to showcase our development skills, that our development or our skills, that how much we know by making our code open. Okay, so there are many ways in which you can contribute code, that is making intellectual contribution into any organization. That is, you can directly either contribute, you see the code, you see the source code and you find mistakes, so you fix the issues or you spot the errors. So or once you update, make a new, apply a new feature, integrate a new feature, you can contribute to the documentation to fix anything that is left in it. So so code reviews and finding new issues are also things that you can do once you go too much into all of this. Okay, so next slide, please. Okay.
Okay. Next slide. Oh, yeah. Okay, so now coming to the theme of our program. So about open source programs. So what, as mentioned here, as mentioned here and in the poster of the workshop, that this workshop is mainly for GSoC, but then there are other open source programs also, like Outreachy. Outreachy is one that is especially for girls, and it is because in the open source world, not many women are there. So to promote open source and women, there is outreach. So uh, let's see what we can benefit from all of these. Again, the main uh, thing in open source for students is that we can learn the real world development skills. Like, so most of us who have written code for maybe for our website or maybe for any project of ours, they at max go into a few thousand lines of code at max. So now when we will go into actual any company, there the source code won't just be of a few thousand lines of code. They'll be in tens of thousands of lines of code or millions of lines of code also. I haven't seen many millions of lines of code, but yeah, still there will be, I'm sure. So now for us to get an exposure uh, into what company into a real world, uh, in real world how code is put into production, and when you'll go into that, you'll also see that you will be working on various technologies. So now there are tests. So you, even if right now you write any project or your website or anything, you'll see that there you must you hardly have worked on a test driven environment, or maybe say a CI/CD pipeline. But again, when you come into open source, these things and few basic things like these are things that you will get to learn, and it will help you develop your skills. Also, you will get to be a part of a community that's mostly, if you'll see open source, the organizations, they are really uh, great communities. Everyone is there willing to help you if you have any issues. If you need any help with your code, to understand their code, they will all be there for you. And you will find that those of you who will go into open source, and if you go into, and I hope you do, you'll see that it's a great workspace, and it is a way in which you can all uh, I mean, it's just wonderful to be part of an open source project. So yeah, and of course now GSoC and Outreach are programs in which we off the Google offers stipends in lakhs, matlab andha paisa, as you can say. So, and it is very prestigious also, of course, to work in this. Many companies will consider you above others if you have skills, if you have got either one of these, if you have been selected in either one of these projects. Okay, so let's move on to the. So now handing over to Ashish for the next slide. Yeah, so actually Ashish will be answering the chats. I'll be taking over, Nishant. So um, yes, let's start with the main GSoC program. So as you can see, like don't worry, these slides will already we'll share these slides with you, so you will be able to open each of these links. So no need to worry about that. But yeah, if you open these three, there's this three links present: GSoC Home, GSoC FAQ, and GSoC Guide. So these three links pretty much provide every single detail that you would like to know about this program. So it will be here, and you'll be easily able to check this out. But इसके अलावा मतलब मैं बस एक ब्रीफ दे देता हूँ कि GSoC क्या होता है. सो बेसिकली इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपन सोर्स प्रोग्राम. मतलब तुम किसी से भी पूछोगे तो उसको एटलीस्ट जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है तो उसको GSoC का नाम पता होगा, या फिर उसने सुना होगा कि GSoC कुछ होता है. सो या उसका उसका इतना रीच है.
एंड लाइक ये तो है ही, इसके अलावा बीइंग लाइक गोइंग टू एन इनफॉर्मल साइड, यू नो, इफ़ यू स्पीक टू एनी वन कि मैंने GSoC किया है, देन इट्स अ ह्यूज थिंग। मतलब तुम्हारा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, स्वैग लेवल बढ़ जाता है। और ऐसा होता हुआ देखा है, हम सब ने देखा है गेस। तो मतलब जिसने भी GSoC क्लियर किया उसको लाइक ये इफेक्ट देखने को मिलता है। And yeah, the next perk is that students work with an open source organization on a 3-month programming project during their summer break. Yeah, that's basic. This sentence basically summarizes it कि 3 months का होता है, प्रोजेक्ट होता है एक, जिसमें तुम्हारा समर्स का जो ब्रेक होता है ना, लाइक आफ्टर यू नो फॉर पीपल फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, after your second semester ends around May to August, you'll be able to work on this project of yours. And yeah, that's it. So how to apply? So इसमें अप्लाई करना बहुत सिंपल है। मतलब like obviously there are a lot of other criterias which each organization has, but the basic criteria which everybody wants is that you need to contact the mentor organizations they want to work with. Yeah, so like उनसे contact करो, so there'll be a lot of mailing list होते हैं, IRC होता है, इंटरनेट रिले चैट बोलते हैं उसको, एंड डिस्कॉर्ड चैनल्स तो होते ही हैं कुछ ऑर्ग्स के, एंड there'll be free node is like a very good IRC channel where मतलब it's basically a server where you'll find all those channels. like तुम हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिकली चैट फोरम होता है। चैट फोरम मतलब like where lots of developers will be there, and you're free to join in any of those servers, है ना? And like those people obviously won't you like you yeah, you can expect them to be from different parts of the world. Okay, it's not that कि इंडिया में ही होंगे या साथ में होंगे, वैसे नहीं। एंड yeah, that's that. And apart from that, write up your projects। मतलब सो बेसिकली अप्लाई करने के लिए तुमको उनसे बात करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन से। एंड मैं वो जो चैट वाला बताया फोरम लाइक IRC, उसके थ्रू आप लाइक उनके साथ बात कर सकते हो। एंड उनके साथ डिस्कस करके यू विल हैव टू सबमिट अ प्रोजेक्ट प्रपोजल। So basically, a project proposal will like I'll just give a brief, the detail about a brief overview of the project proposal. So basically, it contains your details, your contact details, your name, and how to contact you, your social links, and so on. And with that, you propose कि like तुम क्या करना चाहते हो वो 3 महीने में, right? So अब obviously मान लो ऐसा कि you are going for an organization, you want to be a part of an organization, and you are proposing something. So if you want to propose something, then you should know about the organization, right? Otherwise what will you propose? मतलब you cannot just go ahead and say कि मेरे को काम करना है। आपको वो लिखना होगा कि this is what I want to work on, this particular project I like a lot, or maybe if you want like every organization has a project list, maybe जिसमें वो लोग like I'm talking about, not this is not inclusive for all the organization, I'm just talking about some organizations. So जैसे कुछ organizations होते हैं जिनमें there'll be a list of project ideas and you'll have to go there and select those ideas and say like communicate to the organizers that okay, I want to work on this, or I'm very interested in this, या फिर कुछ ऐसे होते हैं। and some like many organizations encourage that you come up with your own ideas, that you saw this, okay, you saw this entire infrastructure, you propose that okay, I can improve this part of the code or maybe this part of this entire organization, and there is an easier way out. I know that I will take 3 months to complete it, and this is what I propose. So that can be your proposal, meaning like it need not be entirely a project idea like given by them, you can also propose your own. So basically this is what which is which goes into making the project proposal, right? So next slide. Yeah, so this is the flow of GSoC 2021. So basically first like initially you explore and start contributing. मतलब ये अभी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि पहले करना था दिसंबर से मार्च तक यू कॉन्टैक्ट, मतलब yeah, so like around March 10th the organizations will get announced,
Okay, so in 2020 there were 199 orgs. So there are a lot of orgs. Orgs matlab organizations, and like you can go in any of these organization out of 199. So how to pick your organization is something which depends on you. तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुमने किस चीज़ पे थोड़ा सा भी पहले काम किया हुआ है या नहीं किया तो फिर भी तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है ऑर्ग, राइट. एंड सो यू कैन सिलेक्ट दैट एंड हाँ उससे कांटेक्ट करने, कांटेक्ट इन द सेंस कि जो मैंने बताया ना IRC चैनल्स है तुम्हारा, लाइक गिटहब के भी तुम कांटेक्ट कर सकते हो. गिटहब का डिस्कशंस का एक बेटा फेज आया है बट ठीक है उसको हटाओ. गिटहब में यू कैन कांटेक्ट डायरेक्टली बाय यू नो देयर आर लॉट ऑफ ओके पुल रिक्वेस्ट होते हैं गिटहब पे बेसिकली. सो यू नो उसमें कुछ मतलब लाइक इफ यू आर प्रपोजिंग समथिंग और इफ एनीवन is proposing something that I want this change to happen, so they submit a pull request. Now why is it called pull request, ये सब तो तुमको बाद में पता चलेगा once you study about GitHub. But basic pull request is basically कि मैं एक part of code है जो मैं लिखा हूँ and I just want my part of the code to be you know a part of the organization, so that's called a pull request. अब उस pull request में there will be a lot of discussions, so you can like as a contributor you can go ahead in those discussions and you know give your input basically कि मतलब तुमको ये कैसा लगा like or what else can you do or something of that sort. Yeah, so that's what the contact phase is all about. And then from March to April you contribute and propose a draft proposal basically. So मतलब इसमें क्या होता है कि अब प्रपोजल जो तुम बना रहे हो है ना, तो वो तुम you wouldn't want that you know that proposal is the final proposal that you make and you just submit it. No, it's not that way. So the proposal is like the mentors or like the people who will be mentoring you. You can contact them and like they will help you draft your proposal. So सब कुछ तुमको नहीं करना है, like तुम करोगे obviously और तुम उनको propose करोगे कि this is what I want to do, is this idea good, and if they get time they will surely go ahead and you know make changes in your proposal. Okay, and this happened to like all four of us कि हमने जो भी प्रोजेक्ट हमने प्रपोज किया, सो जो मेंटर्स थे वो अगर देखे कि तुम्हारा प्रोजेक्ट में दम है, प्रपोजल में दम है, and if they have time then they will surely come before submitting the final draft, they will come to your proposal and they'll edit those things or maybe say that okay this is good, this is bad, this is a good idea, this is how you should write. So these kind of editing that like they can suggest basically. So इसको बोलते हैं ड्राफ्ट प्रपोजल को like देना, मतलब उनसे पूछना कि आप मेरा ड्राफ्ट प्रपोजल देखो और बताओ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, am I going in the correct direction. So this entire thing happens around March to April. Then comes the main submission of the final proposal. Yeah, so yeah, and along with submitting the draft proposal, like in the previous slides it was mentioned that something about issues and reviews. So basically issues in the sense कि GitHub में issues होते हैं. इशू मतलब तुम इशू नाम से ही पता चल रहा है कि GitHub organization है, there is a code base, you found some issue over there. Okay, so you mentioned that in the issue, that is so obvious. Yeah, so like if you find something over there, some error that you found which went unnoticed by other people, so you can mention it in the issues section. And like other mentors will be discussions also happen over there over issues, so like you can do that. And during the contribute and the draft proposal phase, so मतलब तुमको वैसे तो करना है तो कभी भी करो, लेकिन ये टाइम सही रहता है contribute and draft proposal मार्च टू अप्रैल का टाइम. मतलब show the organization organization and the mentors that you are interested, you know stuff, and you are ready to contribute, and you are very enthusiastic about it. मतलब तुम ही सोचो अगर तुम कोई mentor हो किसी organization के, so who will you prefer more, a person who has well idea about the entire organization and the projects, or someone who is just enthusiastic कि हाँ मेरे को बस काम करना है मेरे को ले लो. Obviously the first one, right, the one who is more into all of this and who has done some work and has something to show, so the mentors will obviously prefer them. So yeah, that's there. And then you submit the final proposal which is from March to April, and if you get selected,
then the process goes on, मतलब पहले community bonding period आता है. So it's not necessary that you have to bond, like you can only bond in this period. No, you can start contributing from May 17th itself, है ना? So this is there. And then finally the coding period, which is from June 7th to August 16th. Yeah, so this basically summarizes this. Next slide, please. Okay, so what are the prerequisites for GSoC? So yeah, GitHub, the knowledge of version control is very important. Is actually, you know, this is the part where, like, it depends on many organizations की मतलब तुम्हारा काम कितना ज़्यादा you know technical है कि नहीं है. Maybe some organizations have more of a, you know, documentation related work. मतलब नॉट एंटायरली डॉक्यूमेंटेशन, ऑब्वियसली कोड है, गूगल समर ऑफ कोड है तो उसमें कोड तो रहेगा ही, बट सिंस लाइक स्टिल देर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच डोंट गो इनटू दैट मच ऑफ टेक्निकलिटीज. ओके, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिट एंड गिटहब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मतलब तुमको पता होना चाहिए कि कैसे काम करते हैं. एंड ऐसा भी नहीं है कि मतलब पूरा प्रो होना चाहिए, लाइक यू नो एवरी कमांड ऑफ गिटहब. It's that's also not true. You can work with basic commands, but obviously you'll have to, you know, learn some things new. कि जैसे मैंने जब GSoC किया तो मुझे भी काफ़ी कुछ नया चीज़ सीखने को मिला GitHub में, जो मुझे पहले पता नहीं था, राइट? सो दिस इज़ अ गुड एक्सपीरियंस टू लर्न GitHub एज वेल. एंड ट्रस्ट मी, जब तुमको पता चलेगा कि GitHub ऐसे जो जैसे काम कर रहा है वो क्यों काम कर रहा है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि you know this is good. मतलब GitHub, this is a good way of managing. मतलब इससे ज़्यादा better तरीका नहीं हो सकता है, you know, different people को manage करने का, because everybody is pushing code all the time. And how managing those people, you know, getting to um, merge all of those small bits of code in a very efficient way, in a very productive way, is very important, and Git allows you to do that. सो गिट मतलब एज अ वेरी बेसिक चीज़ मैं बस ये बता दे रहा हूँ कि गिट एज इन वर्जन कंट्रोल सिस्टम, मतलब तुम जो गिट से यू विल डील विथ लोकली, मतलब तुम्हारे लैपटॉप पे गिट चलेगा, ऐसा समझ लो. एंड गिटहब इज़ लाइक ऑनलाइन है वो पूरा चीज़, है ना? सो लाइक गिटहब इज़ ऑनलाइन, गिट यू विल बी डूइंग ऑन योर लैपटॉप. मतलब एज इन अ वेरी 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 लेमैन्स टर्म ये वाला चीज़ है, ऐसा है बस. ठीक है. And yeah, you'll have to know a lot about Git and GitHub as well, so be prepared for that. And हाँ, Linux installed होना it's not compulsory. मतलब बहुत ही अच्छा है कि अगर तुम Linux यूज़ करो. I guess all of us have used Linux, like the people who have contributed to GSoC have all used Linux. But yeah, I don't know if using Windows is a good option, but I would highly recommend कि Linux यूज़ करो. Yeah, so that's there. By the way, dual booting और वो सब का, like we'll tell you about that. मतलब उसके वो थोड़ा सा complicated procedure है, but we'll surely tell you how to proceed with that. मतलब last में पूछ लेना. So next slide please. Okay, so 3 steps to crack GSoC. हाँ, तो जैसे मैंने बोला था, फर्स्ट इज़ लाइक गेटिंग इन्वॉल्व इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर के आसपास. मतलब हाँ, इस समय पे ऑर्गेनाइजेशन ढूंढना स्टार्ट कर दो. फाइंड एन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्ड द सोर्स लोकली, अंडरस्टैंड द वर्क फ्लो. या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब वट एवर ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, फर्स्ट फाइंड दैट ऑर्गेनाइजेशन and then like their entire code base. In some organizations you will be able to clone their repository, है ना? repository मतलब project जो भी organization का, and you will be able to build it locally, है ना? मतलब like उनका जो भी code है you'll be able to like समझ में आ जाएगा जब तुम करना start करोगे. you'll understand all of this अगर नहीं समझ में आ रहा तो. And reading their contribution guide documentation. Yeah, so most organizations, not every, have a contribution guide.
सो उसमें लिखा रहता है कि तुम अगर नए हो, कंट्रीब्यूटर हो, तो तुमको कैसे प्रोसीड करना चाहिए, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, like some organizations, some high level projects like TensorFlow, PyTorch, these projects are quite complicated, so they'll have a lot of stuff written in the contributing guide, and their documentations will be a bit tricky to understand. But there are a lot of other organizations which are quite, beginner friendly, so you can try those as well, and then maybe go to advanced organizations. Joining their mailing list, yeah, this is very important. Like I said, talking to them, this is quite important in open source. मतलब open source basically ऐसा समझ लो कि ये इंस्टाग्राम फॉर डेवलपर्स, इस टाइप का कुछ समझ लो, या सोशल नेटवर्क फॉर डेवलपर्स, वो है ना। तो तुम जितना ज़्यादा बात करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। गिटर भी होता है, या आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस, गिटर इज़ लाइक, मतलब गिटहब का ही एक वो चैट वर्जन, ऐसा समझ लो। ठीक है, सो या दिस इज़ देयर। स्टार्ट बाय सॉल्विंग माइनर इश्यूज। तो मैंने जैसे बताया ना, पुल रिक्वेस्ट और इश्यूज होते हैं डिफरेंट रिपोजिटरी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के रिपोजिटरीज में। सो यू कैन स्टार्ट बाय सॉल्विंग सम माइनर इश्यूज। तो इश्यूज में जब तुम देखोगे, सो उसमें लेबल्स रहते हैं। सो मतलब ये सब तुम जाओगे तो तुमको हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लग जाएगा कि लाइक कुछ इश्यूज रहते हैं जो वेरी बिगनर फ्रेंडली, उसमें लिखा हुआ रहेगा लेबल में कि गुड फॉर बिगिनर्स, या ऐसा कुछ लिखा रहेगा, यू विल अंडरस्टैंड। सो यू कैन ट्राई सॉल्विंग देम फर्स्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोजेक्ट। So yeah, draft your proposal, maximum 3 proposals. Yeah, so there are, मतलब जो प्रपोजल तुम भेज सकते हो, अब ऐसा नहीं कि 100 ऑर्गेनाइजेशन है 100 में भेज दिया, वैसा तुम कर भी नहीं पाओगे ऑब्वियसली, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बिल्ड द प्रोजेक्ट प्रपोजल। मतलब सब लोग मेहनत करेंगे, लेकिन तुमको ये दिखाना है समहाउ मेंटर्स को कि तुम केपेबल हो और तुम रियली इंटरेस्टेड हो, है ना। सो लाइक दिस विल टेक टाइम। इसलिए हमने हमारे ईयर में बस आई गेस 10 पीपल, 10 or 20 पीपल आई गेस सबमिटेड प्रपोजल्स, उनमें से सभी ने एक ही प्रपोजल डाला। देयर वाज दिस वन गाय हु वाज एबल टू प्रोड्यूस 2 प्रपोजल्स, एंड दैट टू लाइक, मतलब रेयर होता है वो, जनरली एक प्रपोजल ही कर पाते हैं, क्योंकि मेहनत लगता है यार प्रपोजल बनाने में। बट यू हैव ऑब्वियसली अ चॉइस फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 प्रपोजल्स। Yeah. The next is view GSoC ideas, understand the project and its requirements. So every organization will have that, जैसे उस प्रोजेक्ट पेज में विकी करके होगा एक टैब, जैसे इश्यूज पुल रिक्वेस्ट है ना, वैसे ही विकी होगा। सो उसमें जनरली दिया रहता है, जैसे मेरे ऑर्ग में वैसे वहीं दिया था कि GSoC आइडियाज़ है, तो उसमें जा करके यू कैन सी व्हाट ऑल आइडियाज़ दे हैव, और यू कैन गिव आउट योर ओन आइडियाज़ एज आई सेड बिफोर। So that's there. And then communicate with project's mentor beforehand. Yeah, this is important. Like वो ड्राफ्ट, तुम्हारे प्रपोजल को भी ड्राफ्ट करने में तुम्हारा मदद करेंगे योर मेंटर्स। सो बी प्रिपेयर्ड टू कम्युनिकेट विद देम इन एनी वे, मतलब ईमेल के थ्रू, IRC के थ्रू, मतलब देख लेना, लोग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग क्राइटेरिया और अलग अलग वेज ऑफ मैनेजमेंट होता है। सो स्टे फोकस ड्यूरिंग द कोडिंग पीरियड। हाँ, जब सिलेक्ट हो जाओगे तब तो ऑब्वियसली अपना टाइम को अच्छा से मैनेज करना होगा कि मतलब ज़्यादा टाइम कोई फालतू चीज़ में वेस्ट नहीं कर दिया, मतलब समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लग गया, करना है बस। स्टार्ट कर, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो मेंटर से कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं कि उसी में अपना दिमाग फोड़ते रह गए और पूरा टाइम दे दिया। दैट शुडंट बी द केस। मैनेज योर टाइम प्रॉपरली एंड आस्क क्वेश्चंस वंस यू गेट सिलेक्टेड। मतलब ऐसा नहीं कि बिफोर सिलेक्शन ही तुम, मतलब वो IRC और तुम्हारा चैट में भेजते जा रहे हो, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वैसे नहीं। अपने से ट्राई करो, नहीं हो तब पूछना। मीट योर प्रपोज्ड डूएबिलिटीज, या मतलब वही है कि जो तुम प्रपोज किया अपने प्रपोजल में, है ना। प्रपोजल में बेसिकली जो तुम लिखते हो ना कि तुम्हारा आइडियाज़ क्या है, एंड व्हाट प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू, लाइक व्हाट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड यू लाइक टू वर्क ऑन। सो विद दैट यू ऑल्सो मेक अ टाइमलाइन कि ओके, this is what I propose and this is the timeline. So basically from for the first 2 weeks I'll be working on this thing, the second 2 weeks I'll be working on the testing of those things that I made in the first 2 weeks, and so on. Like you make an entire timeline which is
like around the time interval is 2 weeks maybe. Like for 2 weeks you have this plan, for the next 2 weeks you have this plan, and so on. So this is what you propose, and obviously you can, while coding period, because you cannot go ahead and predict everything, so your proposals can be a bit shifted. मतलब तुम्हारा टाइमलाइन थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, क्या पता तुम थोड़ा जल्दी ही कर लिए, क्या पता तुम्हारा थोड़ा लेट एक्सटेंड हो गया, है ना? तो वो चीज़ होता है, बट ट्राई टू स्टिक टू योर प्रपोजल, ट्राई टू स्टिक टू योर टाइमलाइन। ओके, दैट्स जस्ट अ बेसिक रिक्वायरमेंट। बाकी ऑर्गेनाइजेशन जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे ना, तब तो बहुत आसान हो जाएगा। मतलब द ऑर्गेनाइजेशन मेंटर्स, दे विल हैव अ मीटिंग, यू अटेंड दैट एंड यू विल गेट टू नो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, है ना? ये सब तुमको सब पता चल जाएगा, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, वो और सिलेक्ट होने के बाद, है ना? सो ये काफ़ी दूर का बात है, बट ठीक है, बोल देते हैं अभी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। Yeah, so I guess Nishant can take it from here. Mithil? Hello. Yeah, am I audible? Yeah, you are audible now. हाँ, तो या तो अब ये देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो सबसे पहले ये गूगल ऑफ ये मतलब जीसॉ का ऑफिशियल आर्काइव है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस प्रीवियसली आ चुकी हैं तो मतलब गूगल समर ऑफ कोड में, मतलब ऐसा है कि ऑर्गेनाइजेशंस को भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हम गूगल समर ऑफ कोड में आना चाहते हैं, तो गूगल शॉर्टलिस्ट करता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करेंगी। तो मतलब यू कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशंस फिक्स नहीं होती, मतलब हर साल मतलब नई लिस्ट आती है, पर मोस्टली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑलमोस्ट आती हैं हर साल। तो लाइक दिस इज द ऑफिशियल आर्काइव ऑफ गूगल समर ऑफ कोड। तो जैसे तुम्हें 2020 के ऑर्गेनाइजेशंस देखने हैं तो यू कैन क्लिक हियर, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मतलब गूगल समर ऑफ कोड में आई थी और 2020 में। तो या यू कैन मतलब यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि बाय कैटेगरी, कि जैसे तुम्हें वेब डेवलपमेंट इंटरेस्ट है तो यू कैन क्लिक वेब एंड, और ये मतलब वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वेब से रिलेटेड। तो लाइक मतलब कोई भी ऐसे खोल के देख सकते हो, जैसे जैसे मैंने जीसॉक ओपिया में किया था, तो लाइक ये पेज है। मतलब यहाँ पे दे सकते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस पे मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे आइडियाज थे इस ऑर्गेनाइजेशन के 2020 में, और ये प्रोजेक्ट्स है जो मतलब कंप्लीट हो गए थे। मतलब हाँ, ये शायद किसी ने चीज़ मेंशन नहीं करी पर मैं कर देता हूँ, मतलब जस्ट फॉर इन्फो कि मतलब सिलेक्ट होने के बाद भी तुम लाइक फेल हो सकते हो। तो जैसे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया लेकिन तुमने उसके बाद काम ही नहीं किया, तो तुम फेल हो सकते हो। मतलब लाइक कंप्लीट मतलब ऐसा तब माना जाएगा कि तुमने कंप्लीटली प्रोजेक्ट कर लिया है जब तुम फाइनली अपने प्रपोजल को डिलीवर कर दो। तो ये होता है। और या मतलब जी ऑफिशियल जीसॉक आर्काइव में देख सकते हो कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक जीसॉक ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट एक पीडीएफ है, ये वो 2 साल पहले एक शायद बिट्स ने बनाई थी एक लिस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा बार आती हैं टाइम सिलेक्टेड, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं। इससे अपनी ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि किस में कंट्रीब्यूट करना है या किस में मुझे इंटरेस्ट है। तो ये एक लिस्ट है। तो एक जीसॉक ऑर्गेनाइजेशन डॉट डेव, ये एक वो है कि इसमें देख सकते हो कि कौन कौन सी लाइक ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से साल आई थी। तो जैसे तुम ये देखना चाहते हो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 4 साल से, लाइक इसमें 2020 नहीं है शायद, तो 4 साल से आ रही हैं, तो ये देख सकते हो। और ये एक रिसोर्स है तुम्हारे पास ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट करने का। और एक जीसॉक एनालाइजर है। मतलब ये वो चीज़ें हैं, मतलब कि ऑफिशियल चीज़ तो बस यही है जीसॉक आर्काइव। ये बाकी ये चीज़ें जो लोगों ने डाटा इसे स्क्रैप करके एक अपने मतलब
अपने जूनियर्स के लिए बनाई है। तो यहाँ पे जैसे टेक स्टैक सर्च कर सकते हो, जैसे जावास्क्रिप्ट सर्च करके तुम सारी ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट देख सकते हो। तो तुम्हारे पास अभी ये रिसोर्सेज हैं जिससे तुम देख सकते हो कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस पे तुम्हें इंटरेस्ट है, किनको तुम्हें टारगेट करना है। और या नाउ लाइक मैं मतलब तुम्हें एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे कोई भी तुम्हें एक ऑर्गेनाइजेशन पे इंटरेस्ट है तो स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले इसी ओपिया को देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे इनकी गिटअप की लिंक है, तो यहाँ पे जाओगे तो यूल सी कि ये उनका कोड बेस है। और मतलब हमेशा जो फर्स्ट चीज तुम्हें देखनी है वो है readme.md। readme में तुम्हें मतलब मोस्टली मिल जाएगा कि मतलब कि अगर तुम्हें कंट्रीब्यूट करना है तो कैसे स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग सेक्शन है, सो इसमें देख सकते हो कि इफ यू आर अ डेवलपर देन प्लीज सी दिस विकी पेज। तो नाउ यू गो टू दिस विकी पेज और यहाँ पे like they have compiled all the resources like you need to get started with Opia। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि first you need to sign an agreement, then you need to set up Opia, and then you can just start on these issues, like start contributing on these issues। तो मतलब मोस्टली मतलब मोस्टली ये होगा कि मतलब उसके रीडमी में मेंशन होगा ऑर्गेनाइजेशन के कि तुम्हें कैसे स्टार्ट करना है। अगर नहीं है तो तुम मतलब यू कैन खुद से तुम चेक कर सकते हो उनका विकी पेज। अगर विकी में चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस है क्या कंट्रीब्यूटर्स के लिए। अगर मतलब विकी में भी नहीं है, रीडमी में भी नहीं है, तो ऑलमोस्ट तो मतलब श्योरली ऑर्गेनाइजेशन का एक contributing.md फाइल होगा। इसका है या नहीं है नहीं पता। ओके मतलब इनका नहीं है contributing.md, बट मोस्टली अगर ये सब नहीं है तो एक contributing.md फाइल होगा, वहां से तुम देख सकते हो। जैसे अभी कोई और ऑर्गेनाइजेशन का देख लेते हैं। सपोज you want to like get started with OC, तो you can go to this link। यहाँ पे इनका मतलब ये इनका मेन पेज है। तो now you can go to their git। हाँ तो इनका कोड ये ऑर्गेनाइजेशन गिटलैब पे है। तो ये रहे इनके ये प्रोजेक्ट्स हैं। तो तुम देख सकते हो कि इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किस उस पे होते हैं, मतलब कौन से प्रोजेक्ट इनके एक्टिव हैं। तो जैसे इन्होंने लिखा है कि अगोरा वेब पे एक प्रोजेक्ट था, तो मतलब एक एक्टिव प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो कि इसको कैसे सेटअप करना है और कैसे कंट्रीब्यूट करना है। अच्छा हाँ, शायद एक चीज मैं बताना भूल गया कि जब तुम्हें मतलब ये इंस्ट्रक्शंस मिल जाए तो तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है कंट्रीब्यूट करना। तो मतलब फ्लो क्या होता है बेसिकली। तो जैसे तुम इश्यूज पे जाओगे, अब इश्यूज टैब पे जाओगे तो मोस्टली मतलब ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन एक इशू अप्लाई, एक लेबल अप्लाई करती है अपने इश्यूज पे, गुड फर्स्ट इशू। तो ये सारे वो इश्यूज हैं जो गुड फर्स्ट इशू हैं। ये like these issues like are meant only for the people like who are contributing for the first time or who are newcomers for to this community। तो जो इशू सबसे आसान है तो वो इश्यूज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब if you open this issue and try to read, तो तो यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ कि ये इशू क्या है, एक्चुअली हमें सॉल्व क्या करना चाहते हैं, क्या दिक्कत क्या है, और मतलब ये फाइल्स में करना है। तो लाइक इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन पर मतलब कि इनका कल्चर क्या है। पर मोस्टली ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि टू वर्क ऑन समथिंग यू नीड टू फर्स्ट कमेंट हियर कि आई वांट टू वर्क ऑन दिस थिंग, और फिर उनका एक मतलब बंदा आएगा और वो कहेगा कि हाँ ना ओके या श्योर यू कैन वर्क ऑन दिस, और मतलब फिर तुम उस चीज़ पे काम करना शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है तो यहीं पे पिंग कर सकते हो उन्हें कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है सेटअप करने में, ये हो रहा है।
या मतलब मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस का एक चैनल भी होता है, एक कम्युनिकेशन चैनल जिससे वो मेनली कम्युनिकेट करते हैं। जैसे यहाँ पे गेटर लिखा हुआ है, तो यू कैन गो टू गेटर और यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो उनके साथ। उनसे अगर तुम्हें कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो और पूछ सकते हो कि बिजनेस के लिए कौन सा इशू सबसे सही रहेगा, या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है सेटअप करने में। तो ओपन सोर्स कम्युनिटीज मोस्टली एक्टिव होती हैं और तुम्हें मतलब रिप्लाई कर देंगी। और या तो ये होता है। एंड आफ्टर लाइक जब तुम ये इशू पिक कर लो, तब उसके बाद तुम सॉल्व कर सकते हो और फिर तुम एक पुल रिक्वेस्ट मारते हो। पुल रिक्वेस्ट मतलब काइंड ऑफ ये होता है कि तुम कुछ चेंजेस प्रपोज कर रहे हो। जैसे इफ यू ओपन एनी पुल रिक्वेस्ट, जैसे ये पुल रिक्वेस्ट खोली मैंने, तो यहाँ पे तुम डिस्क्राइब कर रहे हो कि मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं, है ना। और मतलब बेसिकली फाइल चेंज में जाओगे तो यहाँ पे देखेगा कि इसने मतलब ये चेंजेस प्रपोज करे हैं, ये कोड लिखा है। मतलब जरूरी नहीं कि तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट भी इतनी बड़ी हो, इतना ज्यादा कोड लिखा हो तुमने 500 लाइंस का। तुम्हारी इनिशियल पुल रिक्वेस्ट तो छोटी सी होंगी, मतलब कि हो सकता है 50 लाइंस ऑफ कोड हो सकता है 10 लाइंस हो सकता है 100 हो, या हो सकता है बड़ा भी हो। मतलब और फिर उसके बाद जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो तुम्हारा कोड रिव्यू करेंगे, लाइक दे रिव्यू मतलब जो उन्हें चीज़ें सही नहीं लग रही तुम्हारे कोड में, फिर तुम दोबारा इनकी मतलब इनके रिव्यूज को एड्रेस करोगे कि ये तुमने क्यों किया, या तुमसे गलती हो गई तो तुम उसको सही करोगे। और फिर मतलब लाइक वो तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट मर्ज कर लेंगे। तो यू कैन से दैट मतलब तुम्हारा कोड फिर उनकी मेन जो कोड है उनके एप्लीकेशन का, उनके ऐप का, उसमें चला जाएगा। तो ये कंट्रीब्यूशन होता है जब तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो जाए। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि जब भी कोई तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन देखनी है तो तुम्हें पहले उसका कोड देखना है या उसकी कंट्रीब्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस देखने की, तुम कैसे कंट्रीब्यूशन शुरू करो। और उसके बाद और मतलब कि वहाँ पे लिखा होगा कि तुम कैसे मतलब कि शुरू कर सकते हो, कौन कौन से इश्यूज लेने चाहिए कंट्रीब्यूटर्स को उस कम्युनिटी के। ये हर कम्युनिटी कम्युनिटी डिफर करता है। बाय कम्युनिटी आई मीन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर करता है। और अगर मतलब इश्यूज नहीं मेंशन है तो तुम खुद इश्यूज पे जाके गुड फर्स्ट इशू सर्च कर सकते हो। तो गुड फर्स्ट इश्यूज मतलब उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो पहली बार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसके बाद जब तुमने एक गुड फर्स्ट इशू सॉल्व कर लिया है, फिर तुम उसके बाद उन्हें पूछ सकते हो कि मैंने गुड फर्स्ट इशू कर लिया है, मुझे कुछ थोड़ा और चैलेंजिंग चाहिए, मुझे थोड़ा और अच्छा इशू सॉल्व करना है, मुझे कोड बेस थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। तो तुम कर सकते हो। मतलब कि इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि तुम शुरू से लेकर लास्ट तक GSoC एप्लीकेशन पीरियड तक सिर्फ गुड फर्स्ट इशू सॉल्व करते रहो, क्योंकि मतलब गुड फर्स्ट इशू जनरली बहुत आसान होते हैं। और मतलब वो उसी बंदे को प्रेफर करेंगे जो मतलब कि जिसे नॉलेज हो कोड बेस की, जो प्रोजेक्ट पूरा कर सके एक्चुअली। तो दैट्स ऑल कि हाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग इश्यूज। और नाउ we'll tell you a bit about our experience. So I think we can start with Ashish maybe. Yeah, Ashish, you can. Yeah, hello everyone. So मैंने चलिए अच्छा फुल स्क्रीन हो रहा है। ओके, तो मैंने इस साल GSoC किया था OSG ऑर्गेनाइजेशन में। तो OSG GSoC में मतलब कुछ ऐसे ऑर्ग्स होते हैं जैसे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। मतलब एक बड़ी ऑर्ग है, उसके अंदर 5-6 छोटी ऑर्ग है। तो OSGeo एक बड़ी ऑर्ग थी। इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू ओपन सोर्स जियोस्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन इट इज़। सो कुछ भी जियोस्पेशियल रिलेटेड चीज़ के लिए होता है, जैसे लाइक यू सी ओपन स्ट्रीट मैप्स। मैप्स पे अगर राउटिंग करते हैं फ्रॉम वन प्लेस यू हैव टू गो टू सम अदर प्लेस। So for open source maps, all everything which is related to geospatial, those organizations they come under OSGeo. So there is in OSGeo there was an org called PG routing. In that I did GSoC. So मैंने एक्सप्लोर बहुत शुरू से स्टार्ट किया था। लाइक नवंबर दिसंबर में मैंने बेसिकली बस ऐसे एक्सप्लोर किया था, उतना ऑर्ग में कंट्रीब्यूट नहीं किया था। मैंने मेनली कंट्रीब्यूशन स्टार्ट की फरवरी में, जब ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हुई थी। उस टाइम मैंने इन्हें कांटेक्ट किया और फिर मुझे इनका अच्छा लगा टेक्नोलॉजी।
तो फिर शुरू में इश्यूज सॉल्व किए, फिर प्रपोजल ड्राफ्ट किया, फिर मतलब उसमें प्रपोजल ड्राफ्ट करना होता है, तो लाइक मेरा प्रपोजल लगभग 30-40 पेजेस का था। उसमें लिखना पड़ता है कि मुझे इस पर्टिकुलर आइडिया में इंटरेस्ट है, मैं ऐसे ऐसे करके आइडिया सॉल्व करूँगा। लाइक 12 वीक्स में लाइक आइडियाज डिवाइडेड होता है, तो पूरा मेंशन करना पड़ता है। फर्स्ट वीक आई डू दिस थिंग, सेकेंड वीक आई डू दिस थिंग, ऐसे करके लाइक इन दिस इस साल 10 वीक्स का है। सो इन आवर टाइम इट वाज 12 वीक्स। सो ऐसे करके प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं। सो आफ्टर दैट द मेंटर्स रिव्यूड द प्रपोजल एंड दे एक्सेप्टेड इट। So this organization, my work was adding extension to Postgres database. Postgres एक database होता है, उसमें extension PG routing is an extension to PostGIS, Postgres geospatial database. Yeah, about the proposal, yes, we can share it at the end, or maybe we'll have a Discord group and there you can have it. For your guidance, we'll share the proposal. So it is a extension to the PostGIS, that is Postgres geospatial database. So इसमें मतलब मैंने extensions add की थी like ग्राफ पे राउटिंग के लिए। लाइक मेरे केस में sequential vertex coloring एक ग्राफ एल्गोरिदम है, सो मैंने वो ऐड की थी और कुछ बग फिक्सेस किए थे। So that was all about my experience. So now I think someone else can share their experience. Maybe Nishant, Mittal. ठीक है। तो ठीक, किसी का मैसेज आया कि कैन यू लाइक शेयर योर प्रपोजल। सो प्रपोजल हम शेयर कर देंगे बाद में, व्हेन योर टाइम विल कम। लाइक करंटली हो सकता है तुम लोग थोड़ा तुम्हें लगे कि थोड़ा मुश्किल काम है, या डर जाओ कि मतलब यार, फर्स्ट वी वांट यू टू लाइक गेट स्टार्टेड विद ओपन सोर्स। मतलब प्रपोजल तो बहुत बात की चीज है, अराउंड आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन आर लाइक अनाउंस्ड, और तुम्हें कोई आइडिया अच्छा लग जाए तब की चीज है प्रपोजल। तो हम्म, तो ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये था, मतलब कि ओपिया एक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ओपिया एक बेसिकली एक वेब और एंड्रॉयड एप्लीकेशन है छोटे बच्चों के लिए, जो मतलब पढ़ना चाहते या जिनके पास एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, तो उनके लिए एक एप्लीकेशन है। टेक स्टैक इसका इन्वॉल्व करता है एंगुलर और गूगल ऐप इंजन। तो ओपिया एक मतलब कि मेरा काफी इंटरेस्ट था एक जीसॉक प्रोजेक्ट करने में। तो मतलब आई सो ओपिया मतलब कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलमोस्ट हर साल आ रही थी, मतलब 2016 से 19 तक। तो आई डिसाइडेड कि चल मैं इसमें कंट्रीब्यूट करूंगा। तो मतलब मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था ओपिया में कंट्रीब्यूट करना। अराउंड December 2019 I started contributing to ओपिया एंड हाँ मतलब कि तब से मतलब वो तब से मतलब आई स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू ओपिया, और उनका कोड बेस काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया था मैंने जीसोक आने तक, कि मतलब इनका बेसिकली मतलब इनके पूरे कोड बेस का ऑलमोस्ट आइडिया लग गया था मुझे कि चीजें कैसी चलती हैं इसमें। तो या तो होता गया, और फिर मतलब ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हुई और फिर ओपिया मतलब सिलेक्ट हो गई थी। तो ठीक है, मेरे एफर्ट्स वेस्ट नहीं हुए थे। और उसके बाद फिर आइडियाज की एक लिस्ट आई थी। तो अच्छा, आई शो यू कि आइडियाज की लिस्ट कैसे होती है। मतलब जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही थे, पर काइंड ऑफ ऐसे होती है आइडियाज की लिस्ट। ओके, ये रही। तो ये तो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स एंड हाँ ये रहे। जैसे ये एक आइडियाज की लिस्ट है कि जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन जब सिलेक्ट हो जाएगी तब रिलीज करेगी कि हम चाहते हैं कि लोग इन्हीं आइडियाज पे काम करें। तो जैसे मैंने मतलब सारे आइडियाज इनके पढ़े, और मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये था कि सॉल्व ऑल टाइप्स वेब पैकेज इन द कोड बेस। तो मैंने इनकी ये पढ़ा कि ये क्या चाहते हैं इसमें, और फिर मतलब कि मैंने एक प्रपोजल ड्राफ्ट करा, और मतलब कि
मतलब डिपेंड करता है हर ऑर्गेनाइजेशन पे, पर ओपिया के खुद के चैनल से मेलिंग लिस्ट थी, और ये खुद से ही मतलब प्रपोजल रिव्यू कर देते थे। तो मतलब मैंने एक इनिशियल ड्राफ्ट बनाया, तो मेंटर्स ने सजेशंस दिए कि मतलब प्रपोजल को कैसे स्ट्रांग बना सकते हो और कैसे कर सकते हो, और फिर मतलब ऐसे उनके हेल्प के साथ मैंने मतलब प्रपोजल फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया और फिर भेज दिया था। एंड देन आई वाज सिलेक्टेड, और देन मतलब मैंने अपना प्रपोजल टाइम पे डिलीवर कर दिया था। एंड या that was my experience. So now I guess Himanshu, you can share your. ओके सो मैंने ऑलरेडी इक्लिप्स में स्टार्ट कर लिया था। इक्लिप्स मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था अपना ऑर्गेनाइजेशन कि मैं इक्लिप्स में ट्राई करूँगा। सो नाउ usually you can every year you can at max submit your proposals to 3 organizations। मैंने सिर्फ इक्लिप्स पे ही अपना फोकस रखा था। सो पिछले साल के मैंने आइडिया लिस्ट्स देखे इक्लिप्स के कि कौन से सपोर्ट कौन से प्रोजेक्ट्स को GSoC में इक्लिप्स ने उतारा था। सो मैंने उनमें से एक को लिया था SWT चार्ट नाम से। इट वाज अ बेसिक चार्टिंग लाइब्रेरी। सो इट इज़ लाइक इक्लिप्स का अपना एक लाइब्रेरी है जावा का, लाइक जावा विडगेट लाइब्रेरी। जैसे जावा FX है, स्विंग है, AWT है, वैसे इक्लिप्स का अपना SWT है। सो टू प्रमोट दैट कि बाकी ये एक छोटा सा ऐसे प्रोजेक्ट था इक्लिप्स का। सो इसमें आए थे मीन्स इसमें एक ये आया था पिछले साल के एक आइडिया लिस्ट में ये था। सो मैंने इसका सोर्स कोड स्टडी किया, अभी दिसंबर में शुरू कर लिया था। दिसंबर में नहीं, आई थिंक जनवरी में शुरू कर लिया था, जनवरी एंड तक समझ चुका था पूरा। सो देन आई ओपनड a pull request and few pull requests in January and February, January end and February half. So then after that when the project mentor जो है मेरा, uh, when he found me worthy, then asked me to he suggested me more technologies to study, that is the desktop application technologies. So in February, almost whole of February and half of March, मैं वही पढ़ता गया फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो विडगेट लाइब्रेरीज हैं। दैट इज़ लिनक्स में ग्नोम है, लिनक्स में GTK है, ग्नोम है, इसमें मैक में ऐसे कैरियो है, कोकोआ, और विंडोज़ में Win32 नाम से विडगेट्स है जो विच द ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़। So these are the things that he asked me to start studying, and so I started doing work on that. And yeah, so then after that, when I said that yeah, I have completed them, then he said that what he did was he allowed me into he made me a member of Eclipse. So now okay, now not all organizations that are open source are on GitHub. They are on GitHub but not entirely on GitHub. Like those जो commercially भी ये कर रहे हैं, those who are aiming for some commercial benefits also. So like Eclipse का जो product है, that is also means इतने सारे workers हैं, developers है उसमें, so fund करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। So to keep it so और competing IDE भी है। Eclipse is by the way a Java IDE. Okay, so like competing IDEs भी है, so to do better they cannot put everything on GitHub. I mean they are open source but they are not on GitHub. And what actually that means is that others means when they allow okay, I'll go into that later, but that is not necessary. But then he allowed me into into Eclipse. He made me a member of Eclipse, and he allowed me into the Eclipse workspace where all Eclipse developers were working. So yeah, my experience in after becoming a member was really good. And he told me before my GSoC, I submitted my proposal. In my proposal, what I did was that other than my proposal mostly consisted of two parts. One was about the library that I initially started contributing with, that is SWT chart.
उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस बनाए, और जो मेजर काम था वो इक्लिप्स के SWT विडगेट लाइब्रेरी में था. सो for that is for what I required all these GNOME, GTK, and Cocoa, Cario, and Win32. So I learned all these things, and yeah, so I submitted my proposal because offering the changes in the code base of SWT and SWT chart. So माय मेंटर ने तो पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारा एक्सेप्ट होने वाला है. मीन्स बिफोर इवन द रिजल्ट्स वेर आउट, आई न्यू दैट आई एम गेटिंग GSoC बिकॉज माय मेंटर टोल्ड मी so. So yeah, and then during GSoC also I saw that what my experience was that you will not just meet people of your organization. You will also get a chance to meet those from other organizations, like uh, जैसे those that जैसे at least Eclipse में I met people from GNOME and Red Hat. So at least I I even collaborated with one guy from Red Hat. नाम था Alexander Kortakov. ठीक है, वो सब बाद में, but yeah, so basically it was really good an experience. And okay, all of this is fine. Again, the starting process for everything is the same. That is, you have to see the starting process. You have to see the libraries. You have to see the previous project idea list, and then go you have to go talk to the mentor, open some pull requests, and then that's and then then further the mentor will guide you. You have to ask your doubts to the mentor and everything. So, and yeah, also just one thing, not everything exactly will not everything will necessarily be open source, as in just say some of my work you'll not find it on GitHub. Most of my work during GSoC you'll not find it on GitHub, but at least and one मैंने और एक इससे बात किया था, और एक GSocer से जब मेरी बात हो रही थी, so he said me that उसके org ने तो NDA साइन करवाया था उससे, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट. सो इफ you'll see, then open source and NDA are like complete opposites. But yeah, these are the things that happen, but once you get into GSoC. But then all of that is something later. What right now you have to focus on is make contributions, uh, um, study the source code of the previous year's projects, make contributions, and uh, yeah, then keep in touch with mentor. And yeah, after you make your first proposal, means after you study the entire code base, then you will know कि क्या क्या कमी है जो rectify कर सकते हैं. So दो वो changes तुम propose करते हो, and okay, so those are the things that you put in your proposal. But before you submit your proposal finally, before you give it to Google, it is better if you get it reviewed by your mentor. मतलब you send it to your mentor to his email, and then you ask him, is this fine? Yeah, then he will see if you the mentor is there to help you. It is not that he is someone against you. He wants more people, and he wants quality people to work under him. So yeah, you can always approach a mentor for any डिसीजन. डोंट हर एक छोटी सी बात पे पिंग मत कर देना. बट या सो ड्यूरिंग योर up to your proposal submission period, at least your mentor is your guide, and you don't have to worry about anything else. All you have to focus on during your GSoC is during your up to your GSoC proposal is that what you are uh, what you are proposing, your mentor should accept it should accept it. You don't have to worry about गूगल इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, या और कुछ होगा कि नहीं. यू हैव टू, अगर मेंटर ने एक्सेप्ट किया है, इफ मेंटर फील्स दैट योर प्रोजेक्ट इज फाइन, देन ही इज द ओनली पर्सन who will be dealing with everything. Google does not know anything about your project.
anything about anything. It only allots seats to the organization, GSoC seats to the organization and to projects, and then it allocates mentors, and then mentors अपना देखते हैं कि किसको सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट नहीं करना, फिर गूगल बाद में फाइनली पैसा देता है. Okay, so that was my experience. And yeah, now moving on, now I will now Ashish Kumar, I'll hand it over to. Well, I already told my experience. Nishant Kumar can tell his experience. Yeah. Okay, so um, my organization was MLPAC, and it's basically, so as the name suggests, it's a machine learning library which is written in C++, and it was developed in Georgia Tech. So by the alumni in Georgia Tech, basically. So yeah, this is about the org. So as far as my experience goes, I started quite late, meaning for some machine learning organizations, like it's not necessary that you start from December or January. Like I started, like obviously I was interested in GSoC, and I wanted to, pursue and learn more about it and maybe participate and, complete the project. So I was looking for those ideas and for the organizations. Like I started looking in December, around December, January, but I was a bit, confused between 2 or 3 organizations. But as time went on, like around March, I was like completely decided that okay, I'm going for MLPAC because the code base is good and I'm able to understand. And by the way, the major reason for me getting this GSoC is that the COVID situation basically. So I had an intern in South Korea by that time, like around February end, but due to Corona, like it was cancelled and everybody was running back home. So like I remember while coming back to my hometown around after midsems. So I was like thinking that should I participate and should I, like I do have the time, so should I like go ahead and do this GSoC thing since my intern is gone? I don't have any other time. So I started working in around March beginning. I was able to complete like I completely focus my attention towards it. So the like I guess around by mid March I was able to create a draft proposal, and I submitted it like when the time came. I submitted my proposal, and since my proposal had some things like I had worked on it quite a lot, so I requested one of the mentors, and they actually came and made some changes to my proposal, which I was thinking that this won't happen because those people are generally very busy. But still I was lucky enough to get that opportunity. That at that time I thought that this is a very good sign that I might get selected, because the mentors are coming and they're like saying that okay, this is a good idea, and this slight change, like would you like to include this? So like the mentors came and they did that, so I thought that this can be a good sign. So this obviously is a good sign if the mentors come and do something with your like proposal. And contribution, so basically to quote the exact number, before submitting my proposal I had a contribution of just 1 PR, and that too it was a very small like uh, a word change basically. So it's not necessary that you are very indulged with the program and the organization before submitting a proposal. No, it's not necessary. You can show your interest and submit a good proposal, and during their proposal review, meaning the 1 month that you get, that buffer time between the results and the submission of proposal. So after submission proposal and the results, there is a 1 month time period. In that time you can show your interest to them by contributing like hell, meaning just go ahead and start contributing anywhere. Okay, there are a lot of things to contribute to. Oh, PRs है, issues है, जाके कुछ भी solve करते रहो, give your input. Meets attend करो. Some organizations will have meets, so I did that, and it was easy then after that. And as far as the project goes on, so my project started, and during the community bonding period,
we didn't write code, but we were discussing stuff and what needs to be done and what changes can be made to the timeline that I had proposed with the mentors. So I was discussing that, and since the COVID situation, they also gave me an option to basically shift my timeline. So like I could start earlier or I could start late. So I chose to start early, and like 2 weeks before the official starting period, I started contributing. And the project, so basically machine learning में reinforcement learning होता है, okay, and I was basically interested in that. So my proposal had soft actor critic and the rainbow architecture to be implemented. थोड़ा मतलब मे बी ऊपर से जाए, बट दीज आर द टू, ऐसा समझ लो एल्गोरिदम्स है ना, जो मेरे को इम्प्लीमेंट करने थे, ठीक है. एंड लाइक दीज टू आई थॉट कि इसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, बट ऐसा नहीं हुआ. मैंने प्रपोजल में 3 महीना लिखा था, बट मेरा 1.5 महीने में हो गया काम. सो मतलब उसके बाद मतलब मेरा अपने इंटरनली काम हो गया, बट मैं दिखाया नहीं उनको कि लाइक माई वर्क इज़ डन. आई यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट हियर एंड देयर एंड मे बी सबमिट, मतलब मेरा काम हो गया और मैं कुछ दिन बाद उसको पुश किया कोड को, वैसा करके करता था मैं. सो आई गॉट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम विद GSoC. मतलब अगर कुछ और भी होता देन आई कुड हैव डन, बट मतलब उस समय GSoC था तो लाइक आई वेंट विद द फ्लो. आई मतलब आफ्टर completing my project I just started learning more about what I had done. मतलब reinforcement में ही और ज़्यादा पढ़ने लगा मैं. So basically yeah, that's it. मतलब ऐसा नहीं है कि you have to complete it within that time period. पहले नहीं कर सकते, वैसा भी नहीं है. You can, अगर तुम्हारा काम जल्दी हो गया then it's well and good. हाँ So मतलब yeah, that's it. अब तो मतलब GSoC में काफी चेंजेस भी हुए हैं प्रोग्राम में. पहले 30 आवर पर वीक के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस को अपने आइडियाज देने होते थे, लेकिन इस बार उन्होंने टाइम रिड्यूस करके 15 आवर पर वीक कर दिया. तो मतलब कि उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा GSoC. Yeah, that's also there. So yeah, that's basically it मेरी तरफ से. अब रिकॉर्डिंग, हाँ आगे स्लाइड्स कर लो यार, डिस्कॉर्ड का लिंक शेयर. हाँ, और हाँ मतलब कि पहले ये मतलब कि सभी जो मतलब लोग इंटरेस्टेड हैं GSoC में, तो ये डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो. तो मतलब लिंक डाल दो. ओके मैं डालता हूँ. डाल दिया मैंने. ओके, तो ठीक है, मतलब ये ज्वाइन कर सकते हो. यहाँ पे हम मतलब कि सीनियर्स होंगे, हम होंगे. मतलब कि अगर तुम्हें कोई भी डाउट होगा ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में या ओपन सोर्स के रिस्पेक्ट में, तो मतलब विल गाइड यू. और हाँ, so that's basically it. So yeah, so you can Okay, I'll stop the recording then, right?